फाइल हो गया आपका डॉक्यूमेंट, कवरिंग कॉपी दे दीजिए जी। ओरिजिनल ओरिजिनल ले लीजिए, मेरे पास फोटो कॉपी है ना मेरे पास। मैटर है, बताइए। Order under Section 5 of the MP Raj Suraksha Adhiniam was passed in the petition 5B. जी The reply has been filed by the state lordship. जी With two basic requirement for order under Section 5B. जी On that point, there is no reply, lordship. जी, क्या रिक्वायरमेंट दीजिएगा, राज्य सुरक्षा अधिनियम दीजिएगा। इसमें जो offences list of offences है lordship, जी that is page 19, the impugned order, जी। annexure P2. यस There are 6 cases alleged against the applicant of IPC lordship. जी इसमें से जो first 3 cases हैं, जी in that cases the appellant has been acquitted. In the first case lordship, there is a compromise and acquitted. In second case he was acquitted. compromise, हाँ Second में acquitted है lordship. acquitted, And third is of motor vehicle act cases, इनमें जुर्माना हुआ है lordship. He was fined. नहीं 270, अच्छा फाइन He was fined. जी इसके बाद जो थर्ड केस है 294 fourth case. One thing, madam, if my lord learned friend is referring the order of the front page of the order, my lord, there in entry number 7 there is a case 84/22, my lord. जी This is actually mistakenly typed, my lord. It is the case of under section 420 and on. आपका नंबर आएगा तब आप बताइएगा ना, हाँ, आपका नंबर आएगा। जी जी, मतलब मैं आपको कहीं जाना तो नहीं है? नहीं वो रुक टाइपोग्राफी। जाइए रुक जाइए, आपका टाइपोग्राफिकल एरर जो है ये इसके भी ऊपर भी सुनेंगे आपको। जी जी, ऑर्डर कौन टाइप करता है आपके? वो क्रिमिनल जिला दंडाधिकारी श्योर ऑर्डर कौन टाइप करता है आपके, जो कि टाइपोग्राफिकल एरर हो जाता है? वो क्रिमिनल केस अरे नहीं भैया, कलेक्टर साहब ने तो पढ़ के किया होगा ना साइन, रिकॉर्ड से मिलान करके। रिकॉर्ड प्लीज जो है रिकॉर्ड पे वो देखा जाएगा। The fourth, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा। I'm so Don't sorry. interrupt. So sorry, man. जी the fourth case is pending lordship. It is 294, 323, 506, 34 of ठीक IPC. है। हाँ, And fifth one is lordship 505 of and 67 of ITF. ये मोबाइल पे मैसेज वगैरह के लिए हाँ। ये जो कैटेगरी है लॉर्डशिप चैप्टर 5 ऑफ आईपीसी 12, 16 and 17 इसमें नहीं आता है lordship. जी And the sixth case is 341, 294, 323 जी और 506. इसमें लॉर्डशिप एक वो चिकित्सकों के साथ भी था विवाद था, तो ये जो कि चिकित्सकों का विवाद वाली धारा भी लगी लेकिन इसमें मेंशन नहीं है। जी। इन माय रिप्लाई दिस वाज देयर, जी, ये पेंडिंग है। ये भी पेंडिंग है। ये भी लेकिन 12, 16, 17 में नहीं आता। नहीं ये वाला आएगा लॉर्डशिप 342, 394 वाला आएगा। जी और ये जो सातवां केस है जो 84 बता रहे हैं, हाँ। इसमें नंबर पे है, इसको 107/16 का लिखा है, हाँ दो इट वाज सेक्शन 420। 420 जी। ये किस चैप्टर में आएगा? It comes under chapter 17, my lord. 70 ठीक है, चलिए। और बाकी रिमेनिंग जो केसेस हैं लॉर्डशिप जी अब सेक्शन 5 की कंप्लायंस बोल रहे थे नहीं होती है। जी क्या कहता है सेक्शन 5? पढ़िएगा प्लीज। सेक्शन 5B लॉर्डशिप, that the movement or 5A, that the movement or act of any person are causing and calculated to cause alarm, danger or harm to a person or property, or 5B, that there are reasonable ground for believing that such person is engaged or is about to engage in a commission of offense involving force of violence or an offense punishable under chapter 12, 16 and 17 or under section 506, 509 of IPC or in the abatement of such offences, and when in the opinion of district magistrate witnesses are not willing to come forward to give evidence in the public against such person by reason of apprehension on their part as regard to the safety of their person and property. जी इसमें लॉर्डशिप एक अशोक पटेल वाला जजमेंट डिवीजन बेंच का जो जजमेंट है, इसमें स्पेसिफाई किया कि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल पास हो। और इसी पे रिलाई करते हुए जजमेंट सिंगल बेंच की गई। जी जी तो मेरा निवेदन ये है कि इन दोनों कंडीशन आप बताइए। Well, my submission is that, my lord, a satisfaction has been recorded by the, we can see the impugned order, my lords. जी पढ़िए। That is in the petition, my lord. Action.
P1 T1. annexure P1 my lord. जस्ट अ मिनट। My lords. P1 My lord. जी, Page number 16 of the ये किसका ऑर्डर है? ये is by the district magistrate my lord. ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नहीं। P1 ऑर्डर। P1 तो Commissioner का Commissioner. P2 my lord at page number 19 my lord. जी 24/4/2023 my lord. जी I'm reading paragraph my lord number 2 my lord. जी पढ़िए। अनावश्यक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। अनावश्यक सूचना उपरांत नियत पेशी को मैं अधिवक्ता उपस्थित उनकी ओर से अधिवक्ता द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि अनावश्यक के विरुद्ध इस्तगासा 10/11 में राजीनामा अपराध क्रमांक 100 में दोषमुक्त, अपराध क्रमांक 55/17 में स्वीकार, अपराध क्रमांक 156 स्वीकार 18 क्या होता है? स्वीकार क्या होता है? मलूट इसीलिए मैं पूछना पड़ता है मेरे को कि बार बार आपके ऑर्डर्स कौन लिखता है। स्वीकार क्या होता है? उसमें तो फाइन लगा है, फाइन को बोलते हैं अर्थदंड। स्वीकार क्या होता है? थोड़ा सा समझाइए ना आप एक एक चीज, क्योंकि वी हैव टू सी द एप्लीकेशन ऑफ माइंड। माइल्स तो ये स्वीकार 55-17 में स्वीकार, अपराध क्रमांक 156/18 जो अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, ये स्वीकार क्या है? थोड़ा सा समझाइएगा जरा। जी आगे पढ़िए। अनावेदक का कोई आतंक नहीं है। पुलिस द्वारा असत्य इस्तगासा प्रस्तुत किया है जो निराधार है। अनावेदक कृषि कार्य कर अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। आवेदन पत्र में निवेदन किया गया है कि अनावेदक के विरुद्ध पुलिस द्वारा असत्य आधारों पर प्रस्तुत किया गया इस्तगासा निरस्त किया जावे। उत्तर का अवलोकन किया गया एवं प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत किया गया। जी पैरा थर्ड में पुलिस अधीक्षक सीओ से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उनके साथ संलग्न अपराध ब्यौरे की पुष्टि हेतु अभियोजन साक्षी श्री राकेश अहिरवार प्रधान आरक्षक थाना श्यामपुर कथन अंकित कराए गए। उन्होंने अपने कथन में बताया कि अनावेदक श्याम मीणा सन ऑफ बलराम मीणा उम्र 40 वर्ष निवासी घाट पलासी थाना श्यामपुर के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड अनुसार वर्ष 2010 से उसके विरुद्ध 7 आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के प्रकरण दर्ज किए गए। अनावेदक डराने धमकाने मारपीट करने अवैध हथियार रखकर धोखाधड़ी करने एवं साइबर अपराध जैसे अपराध का आतंक अपराधी है। अनावेदक से रेहटी क्षेत्र में आसपास के लोग पुलिस में रिपोर्ट करने व न्यायालय में गवाही देने से डरते हैं। इससे जिला बदर किया जाना नितांत आवश्यक है। अनावेदक को बचाव साक्ष्य हेतु नियत पेशी दिनांक 19/12/22 2/1/22 को अवसर दिया गया, किंतु वह अनुपस्थित रहा। इसका प्रकरण में बचाव साक्ष्य अवसर समाप्त कर प्रकरण हेतु तर्क हेतु नियत किया गया। तर्क हेतु नियत पेशी दिनांक को अनावेदक मैं अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, तर्क श्रवण किया गया एवं प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया। मेरे द्वारा प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों पुलिस अधीक्षक सीओ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं आपराधिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अभियोजन साक्ष्य के कथन पर भी परीक्षण किया गया, जिसमें अनावेदक द्वारा किए गए अपराधों को पंजीबद्ध किए जाने की पुष्टि होती है। अनावेदक के विरुद्ध वर्ष 2010 से निरंतर आपराधिक कार्रवाई के साथ एवं प्रतिबंध कार्रवाई के 10 प्रकरण पंजीबद्ध होना पाया जाता है। अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आ रहा है एवं अनावेदक को कानून का कोई भय नहीं रहा है। अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र की शांति व्यवस्था में लोक व्यवस्था को खतरा। उक्त स्थिति में अनावेदक को जेल बदर किया जाना कहाँ लिखा है इसमें कि लोग गवाही देने नहीं आ रहे? ये पैरा 6 से इनका एप्लीकेशन ऑफ माइंड चालू होता है कलेक्टर साहब का, ठीक है ना? ये कलेक्टर साहब कहाँ लिखा the है? only thing is that yes my lord, that is very much there. फिर ये जजमेंट है डीबी का, इसको क्या there is करेंगे? a judgment as well as in DB that का- writ appeal has also been अरे filed. भाई डीबी का जो जजमेंट DB है, की जजमेंट अरे रिट अपील की बात है, ये डीबी का जो जजमेंट है अशोक कुमार पटेल, इसको कैसे, इसको डिस्कस किया है? and this has not been discussed, but my Then- lords have Then a in the similar judgment circumstance. which is a binding precedent on the subsequent bench. This is the decision of 2009. Now, whether it has been distinguished, No, it is then not. which will be law of precedent क्या कहती है? Which judgment will be binding? My lord, नहीं, आप थोड़ा बताइए ना। if the earlier one has not been distinguished in the Then the दे दीजिए वो। single or नहीं। DB दोनों। जी The only submission is that my lord, if my lord may see the criminal records, my lord, आप क्रिमिनल रिकॉर्ड देख लिया? उसमें इसमें कितने केस हैं इनके? चैप्टर 12, 16, 17 में जी मैं काइंडली सी my lord, आपके मुताबिक 2 केस आते हैं, 12, 16, रिसेंटली 22 वाला केस है my lord, 22 वाला तो मान लिया, एक तो वो हो गया पेज नंबर 420 है। पेज नंबर 30 पे my lord, पेज नंबर 30 ऑफ द रेड पिटीशन पे वो उस पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड। जी 30 यस, क्या लिखा है? 11 से इनके आपराधिक मुकदमे शुरू हो जाते हैं।
11, 14, 17, 18, 20, 21 और 22 के जो मुकदमे हैं वो आईपीसी से और अन्य सेक्शंस के अंतर्गत आते हैं, अन्य अ, 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 अपराधों के। और उसके बाद माइलॉट में काइंडली सी द सीरीज माइलॉट कंटिन्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द इस्तिगासा, प्राइवेट इस्तिगासा। हाँ, 11 में भी है, 12 में भी है, 13 में भी। इस्तिगासा के ऊपर उसका राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं कार्रवाई की जा सकती है, ऐसा प्रावधान नहीं अमेंड नहीं करा लीजिए प्रावधान नहीं, ना। मतलब अरे भाई, इसमें अमेंड करा लीजिए। मेरा कहना, मैं दूसरी बात कह लिखिएगा, रहा हूँ, मैं ये कहना दिस चाहता हूँ पिटीशन इज फाइल्ड बीइंग माइलॉट। एग्रीव्ड ऑफ orders dated 27/4/23 passed by learned district magistrate Sihor in case number 0052 of 22, whereby on the basis of list of 17 cases registered against the petitioner from the year 2011 till 2022, an order has been passed externing him from the boundaries of the district of Sihor and the neighboring districts of Bhopal, Raisen, Narmadapuram, Harda, Devas, Shajapur and Rajgarh for a period of 6 months. Next paragraph. It is submitted that petitioner had filed an appeal before the Revenue Commissioner, which too has been rejected by the Revenue Commissioner by order dated 12/7/23. Next paragraph. It is submitted that there is non-application of mind by the District Magistrate Sihor, full stop. At serial number 7 against case crime number 84 of 22, it is mentioned that case was registered under section 107/116 within bracket 3 bracket close CRPC, whereas in fact it is a case under section 420, 294, 506 IPC and 5131R and एक bracket में another bracket S, 325A of SC/ST Act, full stop. It is submitted that there are only 2 cases which will fall within the purview of chapter 12, 16 or 17 against the applicant, namely case crime number 112/20 and case crime number 84/22. Full stop. All other cases are of trivial nature and most of the cases are under section 107/116 within bracket 3 CRPC. It is submitted that he is a victim of political ambitions. Full stop. It is submitted that in terms of the judgment of Honorable Division Bench of the High Court in Ashok Kumar Patel versus State of MP and others 2009 within bracket 4 bracket close MPST 263 within bracket DB bracket close. It is held that for invoking the provisions of section 5 within bracket small b bracket close of Madhya Pradesh Rajya Suraksha Adhiniyam, 1990, 2 conditions are necessary to be satisfied for validity of externment order. Full stop. First, the alleged offence should have close proximity to the order of externment. Secondly, there has to be material to show that witnesses are not coming forward to give evidence against the proposed externee. Full stop. If these 2 conditions are not satisfied, then order of externment passed by the district magistrate and the appellate order of the divisional commissioner affirming that order needs to be quashed. Next paragraph. Shri Anubhav Jain, learned counsel for the state, in his turn submits that case crime number 10/11 mentioned at serial number 8 in the impugned order of the district magistrate 7 dated, sorry, 7, serial number 7, case number crime number 84/22 10/11 काट ले
84/22 as mentioned in the order of the district magistrate dated 24/4/2023 is in fact under section 420, which will be covered under chapter 17. Right. Full stop. However, he has placed reliance on the judgment of single bench in case of Tariq versus alias Bablu decided on 13th May 2022 in WP 8689 of 22 and has held that liberty, wherein it is held that liberty of the petitioner granted under Article 21 and the fundamental freedom granted under Article 19 within bracket small d bracket close of the Constitution of India has limitations and it cannot be unbridled. Full stop. It is submitted that this order of the learned single judge has been upheld by the Honorable Division Bench in WA 660 of 2022. Next para. However, Shri Anubhav Jain fairly admits that none of these judgments, either by the single bench or by the Honorable Division Bench, on which reliance is placed by the state government, has considered the earlier division bench judgment of this High Court in Ashok Kumar Patel, which is a binding precedent. Full stop. Thus, in absence of consideration of the judgment of the Honorable Division Bench, which is a binding precedent, subsequent judgment of the single bench in Tariq alias Bablu cannot bind this court as it cannot be treated as a binding precedent. Full stop. Similarly, in the writ appeal, said judgment has not been considered or referred to, and therefore the earlier judgment of Honorable Division Bench will be a binding precedent for this court and not the subsequent order passed in writ appeal affirming the findings of the writ court. Next para. Thus, the next para. After hearing learned counsel, sorry, ऊपर ही आ जाएगा ये तो लिख लेना. Next para. A perusal of the record reveals that District Magistrate Sihor, after recording factual matrix of the case in para 3, 4 and 5, has dealt with the matter in para 6 and 7. Full stop. In para 6, he has mentioned that he has perused the documents produced by the Superintendent of Police Sihor along with its report and the history of criminal record. Full stop. He examined the statements of the prosecution and the which confirms the list of cases registered against the non-applicant. Full stop. Thereafter, he recorded a finding that since 2010, there have been 7 criminal cases registered and 10 under the prohibitionary orders. Full stop. There is no improvement in the activities of the non-applicant and he is not under fear of law. Full stop. Then he recorded a finding that there is danger to the peace and public is danger to tranquility and public peace, and therefore it is necessary to extern him. However, there is no mention of this fact that witnesses are not coming forward to give evidence against the proposed externee, or that the alleged offences are in close proximity to the order of externment. Full stop. Next para. A careful perusal of the chart reproduced by the district magistrate reveals that 3 out of 17 cases, 3 are of the year 2011. Full stop. 1 case is of the year 2012. Full stop. 2 of the cases of the year 2011 and full stop. Then there are 2 cases of the year 2013.
one case of the year 2014, full stop. Two cases of the year 2016, two cases of the year 2017, three cases of the, sorry, three, names. Cases. Two cases of the year 2018, one of 19, and one of 20, another of 21, and one case of 22, full stop. Analysis of these cases is that out of the three cases of 2011, in one case he was acquitted, a fact which should have been taken note of by the district magistrate had he applied his mind to the facts and circumstances of the case. In two other cases of 2011, they are pertaining to sections under Criminal Procedure Code and not under Chapter 12, 16 or 17 of IPC, full stop. Similarly, cases pertaining to the year 2012 and 2012, 13, 16, 19 are all under the provisions of Criminal Procedure Code, full stop. One of the case of the year 2014 was under section 302, 450, 147, 148, 149 IPC and 25, 27 Arms Act, in which acquittal was recorded by the competent court, full stop. In one of the cases of the year 2017, out of two cases of the year 2017, one was for the offence pertaining to Motor Vehicle Act accident under section 279, 337 IPC and 146/196 Motor Vehicle Act. In that, petitioner had deposited fine. That case is also not under Chapter 12, 16 or 17. Another case of the year 2017 is under provisions of CRPC. Next para. A case of the year 2018 under section 294, 323, 506, 34 IPC is pending. Full stop. There is no material on record to show that, full stop. Similarly, another case of the year another case of 2018 is under section 110 CRPC. Case of the year 2019 is under section 110 CRPC. Full stop. Case under section 505 within bracket 2 IPC, section 67 IT Act is in regard to certain mobile communications. ये भी नहीं आएगा ना बात. This will also not fall within the provisions contained in Chapter 12, 16 and 17. Full stop. Thus, only two cases remain. One of the year 2021 under section 341, 343, क्या है? 353, 294, 332, 506, 34 IPC and another under section 420 IPC. There is no material produced before the district magistrate that in the three pending cases, witnesses are not forthcoming. Full stop. In fact, Superintendent of Police was required to produce the order sheets of the concerned trial court to demonstrate that witnesses feared to come to the court and no evidence was recorded in these three matters. Full stop. Thus, it is evident, next para. Thus, it is evident that without application of mind, District Magistrate Sehore has passed impugned order. Since it does not fulfill the twin requirements laid down by the Honorable Division Bench of this court in Ashok Kumar Patel Supra, and the Commissioner too has passed an order on dotted lines without applying his mind to the facts and circumstances of the case, both the orders deserve to be
set aside and are hereby set aside. Petition is allowed. Respondents are directed to pay a cost of rupees 25,000 in favor of the petition. Toward that will be the cost of the litigation. The cost. Huh? Respondents will be free to recover the cost from the erring officials if they so desire.